Dear students, in last class we studied about mutual induction and we used to say mutual induction is the phenomenon of induction of electric current in a coil due to change in current in another coil. Right? See, let us suppose it is your primary coil and it is your secondary coil, राइट? यह प्राइमरी कॉयल है या सेकेंडरी कॉयल है? हमने यह पढ़ा था जब प्राइमरी में करंट चेंज कराएंगे तो सेकेंडरी में एक करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड दिस वेरी phenomenon of induction of electric current in secondary due to change in current in primary is known as mutual induction. Why mutual induction? Because इसमें जो करंट का इंडक्शन is taking place in secondary, but there is a big role of primary also in this very process. It means that there is mutual cooperation of both two. Means दोनों के mutual cooperation से यहाँ पर करंट का इंडक्शन हो रहा है. Means electromagnetic induction phenomena हो रहा है. That's why this very phenomena is known as electromagnetic induction. Now we are going to study when both coils will be coaxial. अगर दोनों कॉइल जो प्राइमरी और सेकेंडरी होगा कोएक्सियल होगा, then question is this how we can find mutual inductance of the coil, right? Now come over that. Our topic is mutual inductance of two coaxial solenoids. Now see here, longer coil is primary coil having N1 turns and secondary is a smaller one is secondary coil having N2 turns, right? Let us suppose length of the primary coil is L, right? Length of the primary coil is L and area of cross section of the primary coil is capital A, and as we have wounded secondary coil just over primary coil, so area of cross section of the secondary coil will be same as primary, right? Here we have a primary coil P of length L and a cross sectional area having N1 turns, whereas secondary coil has N2 turns. Let us suppose I1 current is flowing in the primary coil. प्राइमरी कॉयल में I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो उस I1 करंट के चलते देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉयल. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? देन वी कैन से B will be equal to mu0 into N into I, where N is number of turns per unit length and I is current flowing through the wire. So we can write it will be equal to mu0 into number of turns in primary by its length L into current flowing in the primary I1. Right? It means that we can write magnetic field inside the primary coil will be equal to mu0 into N into I1, mu0 into N into I1, where N is number of turns per unit length and I1 is current flowing in the primary, and N equal to number of turns per unit length, it means that N1 by L, so it will be equal to mu into N1 by L into I1, right? अब अगर यह प्राइमरी के अंदर जो है इतना फील्ड बन रहा है और यही फील्ड सेकेंडरी के अंदर होना चाहिए, और इस फील्ड का अगर सेकेंडरी के अंदर है तो उसके चलते फील्ड लाइंस होगा, उसके चलते फ्लक्स होगा. इट मीन दैट थ्रू ईच एंड एवरी टर्न फील्ड लाइंस ईच एंड एवरी टर्न ऑफ द सेकेंडरी फील्ड लाइंस विल क्रॉस, so there will be flux. So magnetic flux associated with each and every turn of the secondary
will be equal to, let us suppose phi 2, and this very phi 2 will be same for each and every turn. It will be equal to B into A, where B is magnetic field and A is cross sectional area of the solenoid. So it will be equal to B का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं, म्यू जीरो इंटू N1/L इंटू I1 इंटू A, राइट. अब जरा सा याद कीजिए, हम लोग जो है म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े थे, तो वहाँ पर हम लोग यह पढ़े थे, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी. याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी मीन्स N2 इंटू phi 2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी. क्वेश्चन ही हाउ, ऐसा क्यों? तो ज़रा ध्यान से देखना बाबू, अगर I1 करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी में, तो उसके चलते कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा प्राइमरी में, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा सेकेंडरी में. अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में है तो उसके चलते फील्ड लाइंस भी होगा, फील्ड लाइंस भी है तो उसके चलते फ्लक्स होगा. हर एक टर्न से फ्लक्स होगा तो टोटल फ्लक्स भी होगा. मीन्स टोटल फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1. व्हेन I1 विल बी डबल्ड, फील्ड विल बी डबल्ड, field lines will be doubled, so flux should be also doubled, and we used to write total flux will be directly proportional to I1. तो जब इसको लिखते थे तो याद करो, फिर हम लोग लिखते थे N2 इंटू phi 2, we used to write N2 इंटू phi 2 equal to M into I1. Then can we write M will be equal to N2 into phi 1 I1. So we can write mutual inductance of the two coil will be equal to M equal to flux associated with secondary N2 into phi 2 by I1, right? By I1, which will be equal to N2 is number of turns in secondary into phi 2 flux associated with each and every turn of the primary. So n which is equal to given here, this one. So it will be equal to N2 into mu into N1 into I1 into A by L into divided by I1, and which will be equal to I1 ऊपर कैंसिल कर देंगे, then it will become mu into N1 into N2 into A by L. It means that mutual inductance of the combination of solenoids will be equal to mu 0 into N1 into N2 into area of cross section divided by length of the primary coil, right? Okay.